moving on to exercise related to grammar. Position of adverbs. So पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि adverbs होते क्या हैं. Adverbs are like adjectives. इनका रोल adjectives जैसा होता है. Adjectives nouns को qualify करते हैं, adverbs verbs को qualify करते हैं. मतलब verbs की quality बताते हैं कि अगर कोई action हो रहा है तो किस तरीके से हो रहा है. ये adverbs का रोल होता है. So place adverbs at appropriate places. First is I am happy when it is my birthday. And हमारे पास adverb है always. So ये हमारे पास यहाँ आएगा. I am always happy when it is my birthday. Second is my brother gets up at 6 o'clock from Monday to Friday as he goes jogging. So our adverb is often. So my brother gets up at 6 o'clock from Monday to Friday as he often goes jogging. Third is he went to the market last night. So last night N पे ही आएगा. Fourth is have you been to Hunza Valley? And ever is our adverb. So have you ever been to Hunza Valley? Fifth is the birds were chirping beautifully. Beautifully N पे ही आएगा. Sixth is I am waiting for Khalid to arrive. I have been waiting for over 20 minutes. So I am still waiting for Khalid to arrive. I have been waiting for over 20 minutes. Last is he saw a blind beggar in the market. ये N पे ही आएगा. He saw a blind beggar in the market. Let's move on to our next exercise, which is related to adverb phrase. So phrase क्या होता है? Group of words होते हैं which cannot deliver full meaning and full sense on their own. उनको कुछ और group of words पे depend करने की ज़रूरत होती है. And adverb phrase क्या होते हैं? जो adverb की तरह act करते हैं. And हमने क्या बात की थी कि adverb क्या होते हैं? जो verb को qualify करते हैं, जो बताते हैं कि अगर कोई action हो रहा है तो किस तरह हो रहा है. For example, अगर कोई काम कर रहा है तो वो किस तरह काम कर रहा है. For example, she is writing a letter very neatly. तो इसमें action write का हुआ है और neatly जो है वो हमारे पास adverb है. So an adverb phrase is a group of words that functions like an adverb. Examples: he works carefully. B, they rested at sunset. In example A, carefully is an adverb. In example B, at sunset is an adverb phrase which does the work of an adverb. So आपके पास simple clue ये है कि adverb phrase में ज़्यादातर prepositions आ जाती हैं and you will have group of words. Adverb में तो सिर्फ एक word होता है, phrase में आपके पास एक से ज़्यादा words होंगे जो adverb की तरह function कर रहे होंगे. Moving on to its exercise, इसमें हमें क्या करना है? We have to find a suitable adverb to replace each adverb phrase in the following sentences. So let's see how will we do it. First is our teacher wanted that work to be done without delay. इसमें हम immediately use कर सकते हैं. Immediately is an adverb जो इस adverb phrase की जगह आया है. Second is she is without doubt the most caring person I have ever met. She is definitely the most caring person I have ever met. Moving on to third sentence, which is this plant flowers once every year. तो every year की जगह हम लिख सकते हैं annually. Fourth sentence is you should complete the work in a while. इसकी जगह हम quickly use कर सकते हैं. And then fifth is the two old friends met each other by accident. So इसकी जगह we can use accidentally. Moving on to next exercise, which is related to gerunds and infinitives. अब gerunds और infinitives क्या होते हैं? पहले gerund की बात करते हैं. These verbs can take gerunds after them. अब देखें, enjoy एक verb है,
सलमान enjoys playing tennis. इसमें जो verb playing है वो एक्चुअल में verb नहीं है, वो gerund है. gerund क्या होता है? Apparently it looks like verb. देखने में वो verb जैसा लगता है लेकिन वो verb नहीं होता. वो function noun की तरह कर रहा होता है sentence में, क्योंकि वो what को answer कर रहा होता है. If I say what does Salman enjoy? Then you will say Salman enjoys playing tennis. तो जो चीज़ what को आंसर करती है वो noun होती है. हमेशा ing फॉर्म में आपको gerund नजर आएगा, लेकिन ये एक noun की तरह करेगा. Second example is finish. Mariam finished doing her homework. Quit. Jamil has quit smoking. Put off. Pasha always puts off cleaning his room. Postpone. We postpone having the picnic. Coming towards infinitives. Infinitives का rule simple होता है, ये to plus verb होता है. कोई भी verb to के साथ आएगा वो infinitives होते हैं. Like hope. I hope to learn gerunds. तो to learn जो होगा वो infinitives हो जाएंगे. Expect. I expect to improve my English. Then plan. Sarah plans to attend college. Intend. Mehak is intending to go. To go इसमें infinitive होगा. Mean, he meant to say dear, not dear. So इसमें to say infinitive होगा. After some verbs like begin, start, continue, like, love, hate, intend, and prefer, you can usually use either a gerund or an infinitive. There is practically no difference in meaning. So, इनके बाद हम gerund भी यूज़ कर सकते हैं और infinitive भी यूज़ कर सकते हैं. Meaning में कोई difference नहीं होगा. Examples: after would, should plus like, love, only the infinitive can be used. मतलब कि अगर आपके पास modal verbs would और should हैं और उसके साथ like या love verb आ रहे हैं, तो उसके साथ हमेशा infinitive use होगा. For example, I would love to go for shopping. इसमें would भी आया, love भी आया और इसके साथ हमने to go use किया, which is infinitive. Moving on to its exercise, which is complete the following sentences with infinitive or gerund, whichever is appropriate. First is, we felt the plane dash shake in the room. तो यहाँ पे gerund आएगा. We felt the plane shaking in the room. Second is, I have always disliked smoking. Third is, where did you learn dash speak French? Where did you learn to speak French? तो ये infinitive हो जाएगा. Fourth is the exhibition worth dash visit? यहाँ पे visiting आएगा. Fifth is, I don't mind dash get up early. I don't mind getting up early. Sixth is, we'd love dash come with you. We'd love to come with you. Infinitive आएगा. Seventh is, she seems dash know this place. She seems to know this place. और to के साथ हमेशा याद रखें first form of verb आती है. Moving on to next exercise, which is related to this topic only, and it is identify gerund and infinitive in the following sentences. So first is, minor cuts and scrapes usually stop bleeding on their own. So we see ing form stops what? Bleeding. तो ये हमारे पास gerund आ गया और ये what को answer कर रहा है. Second is, to clean the area around the wound, use soap and wash cloth. So to clean, ये हमारे पास infinitive आ गया क्योंकि to के साथ first form of verb use हो रहा है. Third is, don't keep checking to see if the bleeding has stopped. अब यहाँ पे दो ing forms आ रही है. Don't keep checking, यहाँ पे ये proper verb है. Don't keep checking to see what? To see if the bleeding has stopped. तो ये जो bleeding है ये gerund का रोल प्ले कर रहा है. Fourth is, so try to keep it out of the actual wound. तो to keep हमारे पास infinitive आ जाएगा. Fifth is, if a rash appears, stop using the ointment.
using हमारे पास gerund है. Stop using what? Stop using the ointment. Sixth is, if dirt or debris remains in the wound after washing, use tweezers cleaned with alcohol to remove the particles. So washing is gerund and to remove is infinitive. Moving on to next exercise, which is related to voices, active voice and passive voice. अब active से passive में change करने के लिए certain rules होते हैं. क्या rules होते हैं? Let's see. Identify the subject, the verb and the object. पहले तो आपके पास simple ये वाला structure होना चाहिए SVO. सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी है इफ़ यू वांट टू चेंज एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस. ट्रांजिटिव होना ज़रूरी है. इन ट्रांजिटिव वर्ब्स के पैसिव वॉइस पॉसिबल नहीं है. तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? चेंज द ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट. जो आपके सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा और जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा. फिर आपने क्या करना है? अपने सब्जेक्ट के लिहाज से हेल्पिंग वर्ब लगाना है, सूटेबल हेल्पिंग वर्ब लगाना है. ठीक है, इफ़ योर सब्जेक्ट इज सिंगुलर आप उसके हिसाब से लगाओगे एंड टेंस को भी ध्यान में रखोगे कि कौन से टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होता है. फोर्थ इज चेंज द वर्ब इनटू पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब. ना डजेंट मैटर कि कौन सा टेंस है, हर टेंस के पैसिव वॉइस में आप हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ करोगे विच इज़ पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म. फिर क्या करोगे आप बाय का इस्तेमाल करोगे. बाय के बाद आप अपना सब्जेक्ट टर्न्ड ऑब्जेक्ट प्लेस करोगे. सिक्स्थ इज चेंज द सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट. जो मैंने पहले स्टेप में बता दिया था कि जो आपका सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट में बदल जाएगा और बाय के बाद आएगा. Let's move on to its exercise. फिर आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी. Its question is, change the following sentences into the passive voice. Subject in the passive sentences may be skipped. So, you must put out all smoking materials. इसमें पहले तो आपने देखना है कि आपके पास subject क्या है. आपके पास subject है you. ये आपके पास आ गया verb. All smoking materials आपके पास आ गया ऑब्जेक्ट. एंड टेंस क्या है? ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है. यू मस्ट पुट आउट ऑल स्मोकिंग मटेरियल्स. लेट्स सी हम इसको कैसे चेंज कर सकते हैं. पहले तो ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट बनाओगे. ऑल स्मोकिंग मटेरियल्स. अब क्या करोगे? मस्ट बी. हेल्पिंग वर्ब मैंने कहा था कि टेंस के अकॉर्डिंग होगा. पुट आउट. पुट का थर्ड फॉर्म पुट ही होता है. पुट आउट. फिर आप बाय लगाओगे. फिर आपका सब्जेक्ट टर्न्ड इनटू ऑब्जेक्ट आ जाएगा विच इज़ यू. तो यू का ऑब्जेक्टिव फॉर्म यू ही रहता है. दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू चेंज इट. सो सेकेंड इज यू मस्ट फैसन द सीट बेल्ट. इसमें आपका सब्जेक्ट क्या है? यू. मस्ट फैसन जो है आपके पास वर्ब आ गया. The seat belt आपके पास object आ गया. Now let's change it into passive voice. The seat belt must be fastened. Third form आया by you. Okay. Moving on to third active voice, which is they will demonstrate safety precautions. So first we'll identify the subject, which is they. Will demonstrate is verb. Safety precautions is object. We'll change it into passive voice. So it will become safety precautions will be. It is future indefinite tense, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास helping verb will be आना चाहिए. And then third form of verb which is demonstrated by. अब they है हमारे पास subject में. अगर हम इसको object बनाएंगे तो they हमारे पास them हो जाएगा.
Moving on to next active voice, which is you should have read the safety instructions. तो आपके पास you है subject, should have read आपके पास आ गया verb, the safety instructions आपके पास आ गया object. इसको अगर हम passive में change करेंगे तो the safety instructions will become our subject. Instructions should have. अब जहाँ पे have has आता है इसके साथ be की फॉर्म been आती है. should have been read. स्पेलिंग्स इसकी read की तरह होती हैं लेकिन थर्ड फॉर्म को हम पढ़ते read है. should have been read by you. Moving on to last active voice, which is you can store small packages in the overhead compartment. So ये हमारे पास you जो है subject है, can store हमारे पास verb है और small packages हमारे पास object है. And as far as this in the overhead compartment is concerned, ये हमारे पास extra information है जो कि end पे ही आती है, unchanged एंड पे ही आती है एंड इट डजंट मेक एनी डिफरेंस क्योंकि मेन स्ट्रक्चर हमारे पास ये है SVO. सो इट्स पैसिव वॉइस विल बी स्मॉल पैकेजेस कैन बी stored by you in the overhead compartment. You can store small packages. तो can store ये हमारे पास present indefinite था, इसमें हमारा can be stored आएगा. So जो हम be की form use करेंगे वो simple be ही रहेगी. With this, we have come towards the end of our today's video lecture. I hope जो भी आज हमने पढ़ा वो आपको clarity के साथ समझ आया होगा. We'll be meeting with some new topic in our next video, inshallah. Till then, take care. This is me, Maha, your English instructor from tutoriadotpk.